Hello everyone, good morning to all. This is Sunita Yadav, your science teacher. And today class we discuss a new chapter in our NCERT book, chapter number 16. The chapter name of this chapter is light. Okay, light, we know the light is form of energy, just like a heat energy, solar energy, जैसे different type की energies होती हैं, उसमें से ही एक energy है light energy. तो light is a form of energy. And without light we cannot see anything. देखिए we have a five sense organ. Our screen sense to touch, है ना? Our ear sense to hear, या help us to hear. Same इसी तरीके से जो हमारी eyes हैं, it create a very important functions. Okay, तो eyes help करती हैं हमें किसी भी चीज को सॉ करने में, देखने में. Okay, बट क्या ओनली आईज हो और हम चीजों को देख पाएंगे क्या? नो. वाई? क्योंकि एक डार्क रूम हो और एक लाइट रूम हो. लाइट रूम में हम सभी ऑब्जेक्ट को इजीली अपनी आईज के थ्रू देख सकते हैं. बट व्हेन वी एंटर इन अ डार्क रूम, बिल्कुल डार्क रूम है और वी हैव अ गुड आईज, सो हम देख पाएंगे कि उसके अंदर जैसे डार्क रूम के अंदर हमारी आईज प्रॉपर्ली फंक्शन में है, तब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्ली सी कर पाएंगे? व्हाई? बिकॉज व्हेन वी सी एनीथिंग या एनी ऑब्जेक्ट, आईज तो रिक्वायरमेंट है ही, उसके साथ में लाइट भी रिक्वायरमेंट है. विदाउट लाइट वी नॉट एबल टू सी एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट. तो द वर्ड इज लार्जली नॉन थ्रू द सेंसेस. जो वर्ड है हम उसको लार्जली नॉन करते हैं, जानते हैं अपने सेंसेस के थ्रू. द सेंस ऑफ साइट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसेस. जो सेंस है साइट का, देखने का, सबसे इंपॉर्टेंट सेंस है. थ्रू इट वी सी माउंटेन, रिवर, ट्री, प्लांट्स, चेयर, पीपल, सो मेनी अदर थिंग्स अराउंड अस. वी ऑल्सो सी क्लाउड्स, रेनबोज एंड बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई. हम इन सब चीजों को देखते हैं. But at night we see the moon and the stars. You are able to see the word and sentence printed on this page. How is seeing made possible? कैसे हम किसी भी object को देख सकते हैं? Okay. In the absence of light, we are unable to see anything. Okay. Or if let us understand how light enable us to see anything around us. When light fall any object, the flower reflect the sunlight falling on it. जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसके ऊपर जो भी लाइट आ रही है, okay, वो उस लाइट को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं. Then we able to saw this object. Okay, suppose an example of this. Okay, this one is room. Here is a light lamp. This one is light lamp और one table is there. ठीक है. देखिए लाइट सोर्स या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हमें पता है कि दोज ऑब्जेक्ट व्हिच प्रोड्यूस लाइट. ठीक है, तो दोज आर द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. बट टेबल इज नॉट अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. बट टेबल भी हम देख सकते हैं. टेबल के अंदर से कोई लाइट एमिट होती है क्या? नो, नहीं होती. लेकिन लाइट लैंप से लाइट एमिट हो रही है. तो होता क्या है कि लैंप से लाइट एमिट होके जो बहुत सारी रेज निकलती हैं, उनमें से ही कुछ रेज टेबल पे आकर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज तक पहुंचती है. ओके, तो क्या हो रहा है कि जो लाइट लैंप है उससे जो लाइट एनर्जी या लाइट रेस निकल रही हैं, वो टेबल पर जाकर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज में आती हैं. देन वी एबल टू सी द टेबल. ओके, जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे सन, मून, लाइट, बल्ब, ये सब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है. इनको तो हम इजीली दे सकते हैं बिकॉज दे एमिट लाइट. ओके, और मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट नॉट एमिट लाइट. then we capable to saw this all the object. Why we saw all the object? जो light है, जो luminous object से जो light आ रही है, वो objects पे आती है, then reflect होती है, और वो reflect हुई जो light है वो हमारे eyes तक आती है. then we able to saw properly the any particular type of object. Okay, now what makes the thing visible? कैसे हम things को visible करते हैं, देख सकते हैं? Have you ever thought how we see various objects? You may say that eyes are. इस यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि आप कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हो, तो आपका आंसर होगा कि ऑफ कोर्स हम आईज से देख सकते हैं. बट कैन यू सी एन ऑब्जेक्ट इन द डार्क? अगर आप अंधेरे में किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो you able to see any object? No. It means that eyes alone cannot see any object. मतलब सिर्फ हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए सिर्फ आईज नहीं चाहिए.
हमें उसके साथ में क्या चाहिए, इट आल्सो इट इज ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम व्हेन ऑब्जेक्ट एंटर आवर आईज, कब होगा, जब लाइट भी हमारी आईज के अंदर एंटर होगी, देन वी एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट। ओके, द लाइट में हैव एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट, जो लाइट है वो ऑब्जेक्ट पर अमिट होती है और मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय, ऑब्जेक्ट क्या करता है, उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ओके, और देन बी एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट। आई थिंक आपको पॉइंट क्लियर हो रहा होगा भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें आइज तो चाहिए, लेकिन सिर्फ आइज से काम नहीं चलेगा, आइज के साथ में क्या होना चाहिए, लाइट, लाइट भी require है। Okay, the light may have been emitted by the object or may have been reflected by it. You learn in class 7 that a polished or shiny surface can act as a mirror. आपने क्लास 7 के अंदर अपना मिरर और लेंस से रिगार्डिंग चैप्टर था, आपको याद होगा। तो मिरर किसको बोलते हैं, एक शाइनी सरफेस है जिसके पीछे की तरफ पॉलिश हुई है, ठीक है। तो एक शाइनी सरफेस है जिसके पीछे पॉलिश कर देते हैं, तो इट एक्ट लाइक अ मिरर, इट एक्ट एज अ मिरर। A mirror changes the direction of light. जो मिरर है लाइट की डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज करता है। That fall on it. Can you tell in which direction the light falling on a surface will be reflected? क्या आप बता सकते हो कि जो मिरर के ऊपर जो लाइट एमिट हो रही है वो किस डायरेक्शन में वापस रिफ्लेक्ट होगी? Let us find out. फर्स्ट नेक्स्ट पॉइंट इज 16.2। ठीक है, अपने 16.1 और इंट्रोडक्शन में मेनली यही बताया है कि आईज एक सेंस ऑर्गन है जो ऑब्जेक्ट को शो करने में हेल्प करती है। हम जो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं वो आईज की हेल्प से देखते हैं, लेकिन सिर्फ आईज रिक्वायर नहीं है, आईज के साथ में लाइट भी रिक्वायर है। ओके, देन आफ्टर वी डिस्कस, एक पॉलिश सरफेस है, एक शाइनी सरफेस है, जिसे एक ग्लास, उसके पीछे एक पॉलिश सरफेस लगा दी हमने, तो देन वो क्या करती है, एक्ट लाइक अ मिरर। और मिरर के ऊपर जब भी लाइट कोई एमिट होगी वो उसको एक अनदर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देगी। अब कौन सी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगी वो डिस्कस करेंगे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के जो रूल्स हैं उनको वन बाय वन हम एक्टिविटी के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द टेबल we fix a white sheet on the paper just like that. this picture में शो किया हुआ है ना, एक white sheet को हम एक टेबल पे स्प्रेड कर देंगे। ओके, टेक अ comb and close its opening except in the middle। अब ये जो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर की चीज दिख रही है, उसमें आपको क्या करना है, उसके साइड के जो पार्ट्स हैं कॉम के उनको ब्लैक पेपर से टोटली कवर कर देना है। एक बीच में एक स्लिट बनानी है, उसको कवर नहीं करना है। तो यानी लेफ्ट का जो कॉम का पार्ट है और राइट का जो कॉम का पार्ट है, बीच के थिन स्लिट से उस पूरे को हम ब्लैक पेपर से कवर कर देंगे। ओके, you can use black paper or for this purpose hold the comb perpendicular to this sheet of paper just like that, through light from the torch through the opening of the comb from one side। अब आपको क्या करना है कि दूसरी तरफ पेपर के यहाँ पर एक साइड में हमें लाइट या लाइट का सोर्स मींस टॉर्च आप ले लीजिए, through the opening of the comb one side, when side adjustment to the torch and the comb you will see a ray of light along the paper on the other side। आप इस तरफ से टॉर्च को टॉर्च की लाइट को एमिट करेंगे तो स्लिट्स में से होती हुई टॉर्च की जो लाइट है आगे की तरफ ट्रांसफर होगी, आगे की तरफ जाएगी। ठीक है, slight adjustment torch comb you will see a ray of light along the paper on the other side of the comb। keep the comb and the torch steady, place a strip of plain mirror in the path of light। अब इस लाइट के पाथ के बीच में हम एक जो हमने मिरर बनाए थे पीछे पॉलिश सरफेस वाला जो मिरर है उसको यहाँ पर इस तरीके से प्लेस कर देंगे। देन जो लाइट है वो इस प्लेन मिरर के सरफेस पर strike करेगी। then light of along the paper on the other side of the comb, keep the comb and the torch steady, place a strip of plain mirror in the path of the light। अब इस plain mirror के पाथ में हमने इसको किया। what do you observe? आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, देखो look at this। यहाँ से जो टॉर्च लाइट है वो स्लिट्स में से होती हुई स्ट्राइक करी मिरर पे, देन इट रिफ्लेक्ट इन अनदर डायरेक्शन, ये रिफ्लेक्ट हो जाती है कौन सी, अनदर डायरेक्शन में। here is two ray, after striking the mirror the ray light reflected in another direction। जो स्ट्राइक के बाद में जो रे ऑफ लाइट है वो अनदर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। the light ray which strike any surface is called a incident ray। और वो लाइट जो स्ट्राइक करती है सरफेस पे इसके मिरर पर, तो इट इज कॉल्ड अ इंसिडेंट रे। the light ray which strike, वो वाली लाइट रे जो स्ट्राइक करेगी मींस
that one. ये जो लाइट है जो मिरर पर स्ट्राइक करेगी, इट इज कॉल्ड अ इंसिडेंट रे. इट इज कॉल्ड अ इंसिडेंट रे. द रे दैट कम बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर द रिफ्लेक्शन. और वो रे जो रिफ्लेक्शन के बाद में रे बन रही है, इट इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्टेड रे. Okay, what is incident ray? The light ray which strike any surface. ऐसी light ray जो surface पर strike करेगी, it is called a incident ray. And those light after strike के बाद में जो एक another direction में reflect होती है, it is called a reflected ray. I hope आपको इन दोनों ray में difference पता पड़ेगा. What is incident ray and what is reflected ray? Okay. First, the law of reflection को understand करने के लिए first we saw this video and then we discuss next point. Reflection of light. Have you observed the path of light when it strikes the mirror or wall in daily life? Does it move along straight line path or changes its direction? Definition. When light ray strikes the boundary of two media, such as air and glass, a part of light is turned back into the same medium. This is called reflection of light. A highly polished surface, such as a mirror, reflects most of the light falling on it. Laws of reflection. 1. The angle of incidence is equal to the angle of reflection. And 2. The incident ray, normal to the mirror at the point of incidence, and the reflected ray all lie in the same plane. These laws are applicable to all types of reflecting surfaces, including spherical surfaces. Types of reflection. The types of reflection are regular reflection and irregular or diffused reflection. Regular reflection. It occurs when a beam of light falls on a smooth and polished surface, such as a plane mirror. Irregular reflection. It occurs when a beam of light falls on a rough surface, such as wall of a room. Incident ray. Light ray striking a reflecting surface. Points of incidence. The point at which the incident ray strikes the reflecting surface. Reflected ray. The light ray obtained after reflection from the surface in the same medium in which the incident ray is traveling. Normal. The perpendicular drawn to the surface at the point of incidence. Angle of incidence. The angle which the incident ray makes with the normal at the point of incidence. It is denoted by the letter I. Angle of reflection. The angle which the reflected ray makes with the normal at the point of incidence. It is denoted by the letter R. Plane of incidence. The plane containing the incident ray and the normal. Plane of reflection. The plane containing the reflected ray and the normal. Okay, class. I think you all are understood what is incident ray and what is reflected ray. I repeat this definition again. The ray of light which fall on the mirror. ऐसी ray of light जो किस पे mirror पे fall हो रही है, reflected surface is called a incident ray. So that one is incident ray. Okay. Then after reflected ray, the ray of light which is sent back after the reflection by the mirror is called a reflected ray. Okay, in this video you understand the point of incidence. What is point of incidence? The point that at which the incident ray strike the reflecting surface. वो point जहाँ पर incident ray क्या कर रही है? Reflect कर रही है. That point is called the point of incidence.
ओके और इसी की में हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं. इट इज अ नॉर्मल. द नॉर्मल इज अ लाइन ड्रॉन एट द राइट एंगल ऑफ द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. जो इंसिडेंस वाला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वाला जो पॉइंट है वहां पर एक राइट एंगल हम लाइन ड्रॉ करते हैं. दैट इज कॉल्ड अ नॉर्मल रे. ओके मैंने आपको 4 पॉइंट्स क्लियर किए हैं. आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे. फर्स्ट थिंग इज इंसिडेंट रे, reflected ray, point of incident and normal ray. I hope this point, all points are clear to you. Okay. Now, sorry. When we draw this diagram, in next activity we understand about the angle of incident and angle of reflection. Okay. जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल रे के साथ में जो भी एंगल बनाती है, इट इज कॉल्ड अ incident angle. We denoted this short ray and normal ray and reflected ray के between जो angle बनता है it is called a reflected angle. Okay, so the angle which the incident ray make the with the normal ray, ऐसा एंगल जो इंसिडेंट के और नॉर्मल रे के साथ में बनता है at the point of incidence is called a angle of incidence. And the angle of the angle which the reflected ray make the normal at the point of incidence is called the reflected angle. Okay, and law of reflection का जो second point जो हम read करने वाले हैं, next activity जो read करने वाले हैं, we understand always incident angle equal to a reflecting angle. Suppose I said incident angle is 30. Okay, so reflected angle also a 30. I said incident angle is 50. So reflected angle is also a 50. Always incident angle and reflected angle, incident angle and reflected angle always equal. Okay. Now we move to a second point. First, we understand a ray of light is an idealization. In reality, we have a narrow beam of light which is made up of several rays. For specifically, we use the term of ray. देखिए रे का मीनिंग क्या होता है? अभी भी लाइट वैसे रे में नहीं आती. एक सिंगल लाइन की बात करें, एक सिंगल किरण बोलते हैं ना अपन जिसको, एक सिंगल लाइन है किसकी, लाइट की. तो वेयर वी यूज अ रे, वेयर वी यूज अ रे एंड मोस्ट ऑफ द बहुत सारी रेज जब साथ में आती हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं बीम ऑफ द लाइट. बीम मीन्स ग्रुप ऑफ रे, बीम मीन्स ग्रुप ऑफ रे एंड वन सिंगल लाइन इज रे. ओके, तो रे एंड बीम में आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया. ओके, ड्रॉ लाइन शोइंग द पोजीशन ऑफ द प्लेन मिरर. एक लाइन ड्रॉ करनी है हमको प्लेन मिरर की पोजीशन को शो करते हुए एंड द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑन द पेपर. जहां से भी वो लाइन जा रही थी, जो इंसिडेंट रे है एंड नॉर्मल रे, उसको हमने उस व्हाइट पेपर पे ड्रॉ कर दिया है. डन. And with remove the mirror and the comb, draw a line making an 90 degree. अब आप comb भी हटा दीजिए, मिरर को रिप्लेस कर दीजिए और उस जगह पर आप 90 डिग्री पर एक नॉर्मल रे को ड्रॉ कर दीजिए. मैंने बताया था ना आपको इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल के बीच में पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से एक 90 डिग्री पे एंगल बनेगा. इट इज अ दिस लाइन इज कॉल्ड अ नॉर्मल. ओके, एट द पॉइंट द एंगल, the angle between the normal and incident ray, जो angle है normal ray और incident ray के बीच का, it is called the angle of incidence. And the angle between the normal and the reflected ray is known as the angle of reflection. Okay, measure the angle incident and the angle of reflection. Repeat this activity several times. आप बार बार इस angle को change करते हुए बार बार इस activity को कीजिए. तो what you observe in this table. When you do it, आप अगर अलग अलग एंगल से इंसिडेंट एंगल को मिरर पे रिफ्लेक्ट करेंगे, then you observe always angle of incident is equal to angle of reflection. If it is 30, it will be angle of reflection, it will be also 30. It is 50, it will also a 50. Okay, it will 40, then angle of reflection is 40.
क्या बेटा बात क्लियर समझ में आ रही है आपको जो मैं समझाना चाह रही हूँ? आर दे अप्रोक्सीमेटली इक्वल इफ द एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट, हम सारे एंगल्स को केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो व्हाट वी सीन, it is seen that the angle of incidence is always equal to angle of reflection. Angle of incidence is always equal to angle of reflection. This is one of the law of reflection. इसी को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, तो फर्स्ट थिंग हम कोई भी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं? क्यों? लाइट जो है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर लाइट आएगी, देन वो रिफ्लेक्ट करेगी, देन वी एबल टू सी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. एंड द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट पॉइंट इज दैट the angle of incidence is equal to the angle of reflection. Okay, next point is law of reflection, we discuss in a next class.